I'm going to enjoy this low calorie and high protein chicken burger. And if you want to do so, please watch this video till the end. And if you love this recipe, please share this recipe with your loved ones and subscribe to my channel. So चलिए मिलके बनाते हैं ये super easy, healthy and extremely tasty burger. Take chicken breast piece and flatten it with a chicken hammer. And please tell me from which city, which country you're watching this recipe so that we can say thank you to you. तो ये आप ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि हम आपको थैंक यू कह सकें. To make this chicken juicy, I have overnight soaked them in salt water. Means I have brined my chicken. This will make my chicken very tender. इसे बनाने से पहले आप चिकन के पीसेस को नमक के पानी में एटलीस्ट 12 घंटा रखिए. इससे आपके चिकन बहुत ही टेंडर और जूसी बनेंगे. Now we'll start adding spices. First we'll add garlic powder, onion powder, smoked paprika, chili powder and salt to taste. अब मसाले को दोनों साइड लगा लीजिए और उसे अच्छे से मसाज करके उसे एटलीस्ट 1 से 2 घंटा रख लीजिए ताकि आपका चिकन बहुत ही टेंडर हो जाए. Now we'll make the honey sauce. For this we'll need 100 gram of low fat Greek yogurt, 1.5 teaspoonful of honey, 1 teaspoon of smoked paprika and 1 teaspoon of hot sauce. Now add little salt and give it a good mix. अब एक प्लेट में कॉर्नफ्लेक्स ले लीजिए और उसमें हम वही वाले स्पाइसेस जो हमने चिकन में लगाए थे हम मिक्स कर लेंगे. लाइक गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, स्मोक्ड पेपरिका, चिली पाउडर, सॉल्ट और इनको अच्छे से हाथ से मसल लीजिए ताकि वो थोड़े चूरा बन जाए. अब हम 2 अंडे को फोड़ लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे हॉट सॉस और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे. With the help of a fork, we will poke the chicken pieces so that it will tenderize the chicken even more. अब हम चिकन की कोटिंग मैदा में कर लेंगे इस तरह से और एक्सेस मैदा को इस तरह से हम निकाल लेंगे. अब हम चिकन पीसेस को एग में डिप कर लेंगे. अब हम इन चिकन पीसेस को कॉर्नफ्लावर में कोट कर लेंगे. Now it's time to air fry or bake the chicken at 190 to 200 degrees Celsius for 15 to 20 minutes or till it's done cooked properly. So now our chicken is ready and it's time to assemble the burger. I'm using multi-grain burger bread which I have slightly toasted and on that I'm applying the yogurt sauce. Next goes lettuce, pickled jalapenos. Now we'll keep the chicken piece and add some more yogurt sauce. If you wish, you can keep one more chicken piece or can close the bun with only one chicken. That's up to you. And now we are ready to enjoy this yummy burger. I hope you love this recipe and do come back next week for another interesting recipe. Till then, take care, bye-bye and please subscribe to my channel.